Can we have the track, please? Om Tagatom Tagajanu Tajjanutam Tagajanutam Tattajam Tattajam Tajjanutam Tagajanutam Tatom Tagatom Tagajanu Tajjanutam Tagajanutam Tattajam Tattajam Tajjanutam Tagajanutam Tatom Tagatom Tagajanu Tajjanutam Tagajanutam Tattajam Tattajam Tajjanutam Tagajanutam Tatom Tagatom Tagajanu Tajjanutam Tagajanutam Tattajam Tattajam Tajjanutam Tagajanutam Tatom Tagatom Tagajanu Tajjanutam Tagajanutam Tattajam Tattajam Tajjanutam Tagajanutam Tatom Tagatom Tagajanu Tajjanutam Tagajanutam Tattajam Tattajam Tajjanutam Tagajanutam Tattajam Tarigida Tagatim Tajjam Tarigida Tagatom Tajjam Tarigida Taganam Tajjam Tarigida Tagatam Tajjam Tajjam Tom Tajjam Nam Tajjam Tarigida Tagatam Tajjam Tajjam Tom Tajjam Namo Tajjam Tarigida Tagatam Tajjam Tarigida Tagatim Tajjam Tarigida Tagatom Tajjam Tarigida Taganam Tajjam Tarigida Tagatam Tarigida Tim Tarigida Tom Tarigida Nam Tarigida Tam Tarigida Tim Tarigida Tom Tarigida Nam Tarigida Tagatam Tarigada Tagatam Tagajanutam Tarigada Tagatam Tarigada Tagatam Tarigada Tagatam Tagajanutam Tarigida Dim Tarigida Tom Tarigida Nam Tarigida Tim 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 Tatajam 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 Tarigida Dim Tarigida Tom Tarigida Nam Tarigida Tim 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 Tatajam 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 Tagajanu Tagatam Taritagajanu Tagatam Taritagajunutam Taritagajunutam Jonu Tagatam Jonu Gatatam Tatiddanam Tagatiku Tadikitatom Dittanam Tagatiku Tadikitatom Dittanam Tagatiku Tadikitatom Tatom Tagatom Tagajanu Tagajanutam Tagajanutam Tattajam Tattajam Tajanutam Tagajanutam Tatom Tagatom बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने संस्कृति को दर्शाया है। Can I please have a huge round of applause for her once again? और इसी के साथ संगीत की दुनिया में ले जाना चाहेंगे हम आपको। So can I request जो विद्यार्थी जिन्होंने संगीत के लिए प्रिपेयर किया है to request them to be on the stage? All the musical performance students and obviously हम इस दिन को म्यूजिक के बिना नहीं मिस कर सकते बिकॉज संगीत के थ्रू हम अपनी दिल की आत्मा से आज के दिन के लिए जो हमारी प्रेरित हम दर्शा सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। Until the stage is set, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक छोटा सा सवाल है मेरा यहाँ पे बैठी ऑडियंस से। आप में से कितनों को ये पता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? कोई मुझे बता सकता है? यस। परफेक्ट। वी ऑल नो इट कि आज हमारा संविधान को घोषित किया गया था। तो आज ही का दिन क्यों चुना गया? कोई मुझे बता सकता है? जी प्लीज। Perfect, perfect. I'm actually very मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो मैं प्रिपेयर करके आई थी इसका आंसर।
चुका था, बट 2 महीने रुके हम उसके लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ये देखा था कि जो एकत्रित होके हमने जो स्वतंत्र के लिए लड़े थे, वो हमने 26 जनवरी 1930 में लड़े थे. So yes, can I have a huge round of applause for him and all of us? So the stage is set. Hello, check. Hello, check. Hello, check.
नहीं डरा वो आंधी से, आतंकी घनघोर अंधेरों से, आतंकी घनघोर अंधेरों से, विस्फोटों से खेला है, विस्फोटों से खेला है। भारत का शेर है वो जो सीमा पे निडर हो बैठा है, भारत का शेर है वो जो सीमा पर निडर हो बैठा है। Can I have a huge round of applause for all the army people who are serving the nation and protecting us? Thank you so much. इसी के साथ गुजराती ट्रेडिशन की तरफ बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी डांस परफॉर्मेंस को ऑन द स्टेज विदाउट फर्दर डिले. Can I please welcome them with a huge round of applause? All set? Can you hit the music, please? Just a minute. All right. So, another question. Are you guys ready for another question?
आई होप इस बार एक से ज़्यादा का आंसर आए. Are you guys ready? Okay. Thank you, ma'am. स्कूल के बाद रिपब्लिक डे किसने ऐसे बोलते हैं कि मनाया है, मतलब कि हाँ उठे हो 9 बजे और गए हो फ्लैग होस्टिंग करने के लिए? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. सो मैं बोल सकती हूँ क्या कि आज के युवा सो नहीं रहे, वो जागे हुए हैं, है ना? सो खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए. और मैं सर को कुछ बोलना चाहूँगी कि सर, आई गेस यहाँ पे जितने भी यूथ हैं उनका कभी ना कभी एक सपना होता है कि आर्मी को सर्व करें, मतलब देश के लिए आर्मी में जाएं ताकि अपने देश के लिए कुछ कर सकें. सर मेरा भी सपना है, पर अफसोस कि मैं नहीं जा पाई आर्मी में सर, बट मैं ट्राई करूँगी. और आई थिंक हम आज अपने आप में ये ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं कि हम देश को अपने तरीके से सर्व करेंगे. ज़रूरी नहीं है सेना पे जाना बहुत बड़ी बात है, पर उसके अलावा भी हम अपने देश के लिए रोज हर रोज कुछ ना कुछ कर सकते हैं. डू यू गाइस एग्री विद मी? ऑल सेट पार्टिसिपेंट्स, कैन वी हिट द म्यूजिक प्लीज? Thank you so much. You all were amazing. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे परफॉर्मर्स के लिए. So up next we have our students who are going to be performing based on a theme on army. So I would like to call our next performers on stage. Our students next performers are mostly from south of India. So we have our South Indian students performing our next performance. So बुलाते हैं उनको stage पे with a huge round of applause. Let's welcome them. मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका, ना झुका, ना डरा है. मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है. मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है. Can I please have a
applause. Thank you. All set? Can we hit the music? జీవితంలో ఎలాగైనా బతకొచ్చు. దేశం కోసం బతకడం అనేది అల్టిమేట్లీ సర్వ్ ద పీపుల్, డై ఫర్ ద కంట్రీ, లివ్ లైక్ ఎ లెజెండ్. మేరా భారత్ మహాన్ మహాన్ మహాన్. Indeed, मेरा भारत महान. एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से हमारे परफॉर्मर्स के लिए. Up next, we have our last cultural performance for today. I would like to call our performers. They're a group performance. It's a group performance, and it's based on a theme. And the theme is Bharat Ka Bhandar. So the choreographer just told me that India भारत का महत्वता हमें इस performance के through देखने को मिलेगा. So I'm very excited about it, and I'm sure you all must also be excited for it. So there is Baki. Let's welcome our next performers on stage. So let's give a huge round of applause and welcome our next performers onto the stage. किसी ने बहुत खूब लिखा है, ये दिल राष्ट्रीय गान गाता रहे, ये ध्वज, ये रंग, ये देश मुझको भाता रहे, ये दिल राष्ट्रीय गान गाता रहे, मुस्कुराकर लुटा देंगे जान इस देश पर, बस ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे, बस ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे. All the participants, can I have you all on the stage? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
गारंटी। अरे गारंटी नहीं, गारंटी। और ये है मेरी बिजनेस पार्टनर वारंटी। जी फिर गलत सुन लिया ना, वारंटी नहीं वारंटी। जी यही तो खूबसूरती है हमारी इस बिजनेस पार्टनरशिप की कि जिस किसी भी गांव में मैं अपना सामान बेचने जाता हूँ, लोगों को तो यही लगता है अजीबा, गारंटी और वारंटी दोनों साथ में मिल रहे हैं। क्यों बिजनेस पार्टनर? अरे पार्टनर, आज तुम्हारी आवाज कुछ धीमी धीमी सी आ रही है। खैर आए भी कैसे ना, तुम इतना सारा भार गली मोहल्लों में लेके जो घूमती रहती हो। अजी हिंदी में कहावत है ना कि घाट घाट का पानी पिया है। जी बिल्कुल वो हम दोनों के लिए ही बनी हुई है। लेकिन पार्टनर, आज तुम थक नहीं सकती। तुम्हें पता है ना आज कौन सा दिन है? 100 साल तक कंपनी राज, 100 साल तक रानी राज, फिर प्रजा के हाथ आई जो सत्ता खरी, वही है आज का दिन 26 जनवरी। अरे चलो चलो, बहुत हो गई बातें आपसे, अब कुछ काम पे भी ध्यान दे दिया जाए। जब कुछ कमाएंगे तभी तो कुछ खा पाएंगे। क्यों पार्टनर? ला ला ला, हा हा हा, ओ हो, ना 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 ना, ला 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 ला, ओए, ला 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 ला। अरे मिल गया ग्राहक। भैया भैया कुछ सामान लोगे क्या? अरे नहीं चाहिए भैया, जाओ ना यहाँ से। अरे भैया देखो ना, मेरे पास एक से एक सामान है, रुको आपको दिखाता हूँ। अरे नहीं चाहिए भैया, बता ना एक बार, जाओ ना यहाँ से। एक बार मैं समझ नहीं आता क्या आपको? अरे भैया समझ तो आता है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है आप कुछ बिखरे बिखरे से लग रहे हो। क्या हुआ है आपको? बेटे, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर लोगे। बस शांति से जाओ तुम। हाँ पापा ठीक है, बस मुझे ये बताओ कि मेरा बैग कहाँ है? अरे वो तो ये रहा। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। सर मैं कमिंग सर। Oh, come in, mister. By the way, you are very late. And also, I've seen your resume. You are not fit for our company. And also, we have hired someone else better than you. Sir, please sir, give me one chance sir. I can prove that I am better than him sir. वो तो हमने आपकी मार्कशीट में देख लिया है कि आप कितने बेहतर हो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सुनो ना। अरे हम सुबह से तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहे थे। वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या हुआ? क्या कहे अब तुम्हें, इस बार भी हमारा नहीं हो पाया। क्या कहा? नहीं हुआ? इंटरव्यू से पहले तो तुम बड़ी बड़ी उम्मीद लेकर जाते हो, लेकिन हर बार की तरह कुछ नहीं कर पाते। देखो, मैं किसी हारे हुए व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, तो मुझे आज के बाद कॉल मत करना। तुम नालायक हो, समाज में मुंह दिखाने के लायक है। क्या करो? Someone is better than you. We have hired someone else better than you. जीवन में कितना भी कुछ कर लो, जब तक तुम जीतोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। एक बात तुम भी सुन लो, और सिंपल सा नियम है, अगर तुम जीते तो तुम सबके रिश्तेदार, और अगर तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार। अरे बस इतनी सी बात? एक मिनट रुको बेटा, तुम्हें पता है ये क्या है? कमल है यार, ये सबको पता है। कमल के फूल को इतना साधारण फूल मत समझना। तुम्हें पता भी है ये कितनी विकट परिस्थितियों में से खिलता है। ये वो फूल है जो कीचड़ जैसे अंधेरे में से भी रोशनी का चिराग बनकर उभरता है। कमल का अगर छोटे से छोटा कण भी मौजूद हो ना, तो वो 1300 साल बाद भी पुनः जीवित होने का सामर्थ्य रखता है। यूं ही थोड़ी ये हमारा राष्ट्रीय फूल कहलाता है। सोचिए, एक फूल भी इतनी कठिन परिस्थिति में हंसता खेलता उभरता है, तो तुम तो भगवान के निर्मित उत्कृष्ट कलाकृति हो, तुम हार नहीं मान सकते। राह पे चल बंदिया।
बात समझ बंदया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल, आज हट जाएगा। चाँद तेरी आँखों में बंदया चल के आएगा। यार इस एग्जाम में तो मैं परेशान ही कर दिया। ओए सही गल है, मैंने तो लगता है मैं फेल ही होऊंगा। पर तूने लिखा क्या ये तो बता। मैंने एक सवाल नु लिखा और फिर की मूसे वाले के गाने लिख दिए। अच्छा कौन सा गाना लिखा? वो सब छड़, तूने तीसरे क्वेश्चन के विच की लिखा? कौन सा क्वेश्चन? अरे ओए ये खत्म कैसे हो गई? इतना तो लिखा भी नहीं एग्जाम में। अरे फेक इसको, दूसरी ले लेंगे। अरे बच्चों ये पेन क्यों फेंक दी तुमने? इधर विच रिफिल तो हैगी पर चल दी नहीं। क्या काम है इसी पेन का? तुम्हें पता भी है एक पेन का कितना महत्व है? पहले एक चिड़िया के पंख से बनाया जाता था, आज एक लोहे या प्लास्टिक के टुकड़े में समाया जाता है। इस कलम ने बड़ों बड़ों की जिंदगी संवारी है। कलम में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े लोगों को डरा देती है। जब कलम कागज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है ना, वो कागज का मूल्य बढ़ा देती है। कलम की बदौलत ही हमारा राष्ट्रगीत, हमारा राष्ट्रगान और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा गया है।
ये पता है तो साले का जो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। चलूं ये चलूं ढाई ढाई चाल मैं, खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे, मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। टोपी का हाथ मैं वो करके दिखाऊंगा, दुनिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब पे मगर झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा। जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का मुझे गाड़ दूंगा। का करत हो यहाँ? ये तुम्हारी जमीन है का? नहीं ना, ये तो हमारी जमीन है। अरे बुर्बक, क्या कर रहे हो तुम? निकालो इसको यहाँ से। नहीं नहीं मुखिया जी, ये जमीन हमारे पुरखों ने पाई पाई जोड़ कर कमाई थी। हमारा अन्न, हमारा धन, हमारा माई बाप यही है, इनसे हमें ना छीने। अरे घर में मेरी एक बिटिया भी है, मेरे को उसका ब्याह भी करवाना है। मुखिया जी। अरे तोहार माई बाप हम ही है। अरे निकालो इसको। नहीं नहीं मुखिया जी, नहीं मुखिया जी, नहीं। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बिटिया, यही दुनिया की रीत है। जो ताकतवर है वो हम गरीबों को दबाता है। और यही हमारा नसीब है बिटिया, यही हमारा नसीब है बिटिया। तू चल यहाँ से बिटिया, तू चल। क्या हुआ बिटिया? ये बाबूजी का हाल बिगड़ा हुआ क्यों लग रहा है? आप ही बताइए, जब इंसान से उसकी रोजी रोटी छीन जाए, जीने का कोई जरिया ही ना बचे, तो उसकी क्या हालत होगी? हर गरीब की यही कहानी है। कागजात होते हुए भी ये जमीन बेगानी है। तानाशाही और राजाशाही नहीं, ये देश प्रजासत्ताक है। यह प्रजा के मूलभूत अधिकार और कानूनन जो संपत्ति प्रजा की है, उसे उससे कोई नहीं छीन सकता। मतलब? रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये लो हमारे देश का संविधान, जो कि किसी भी ऊंच नीच, जात पात, रंग रूप, किसी का भी भेद न रखते हुए हर एक नागरिक को उसका न्याय दिलाने में मदद करता है। ये तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने में भी सहायता करेगा बिटिया। और बेटा, अगली बार बाबूजी को सही से खाना खिलाना। संविधान का है
जब तक हमारे देश का संविधान जीवित है, इस देश की प्रजा के मूलभूत अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। संकट में आया तू बनके सहारा, बनके सहारा, बनके सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बनके सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी व्यवस्थाओं से गिरा चमन, कोटि कोटि भीमराय तुझको नमन। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे छोटू चाय लेगा? लीजिए साहब। हाँ जैन जैन। अरे क्या 500 ले लेंगे? अच्छे से 1500 लो एक एक से। अब ले ही रहे हो तो अच्छे से लो, कंजूसी किस बात की? अरे ये क्या है चाचा, इसको क्या बोलते हैं? ये अशोक स्तंभ है, हमारा राष्ट्र प्रतीक। और इनमें जो 4 शेर है ना, वो हमारे साहस, शक्ति, आत्मविश्वास और गौरव को दर्शाते हैं। और ये चक्र, घोड़ा और बैल, ये क्यों है? घोड़ा हमारे वफादारी, गति और ऊर्जा, बैल हमारी कड़ी मेहनत, दृढ़ता का चिन्ह है। ये चक्र है ना, हमारा धर्म चक्र है, न्याय का चक्र है, जो इस देश के न्याय रक्षकों का प्रतीक है। और ये जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, इसका क्या मतलब है? ये हमारी प्राचीन हिंदू ग्रंथ में से लिया गया है, जिसका मतलब है सत्य की सदैव जीत। जैसे कि हमारे पुलिस बंधु जो कि न्याय के रक्षक हैं और हमेशा सत्य का साथ देते हैं, इसलिए इनके मस्तक पर हमारा राष्ट्र प्रतीक सजता है। जैन सर, हाँ जैन जैन। बड़े सही टाइम पे आए हो सर। बढ़िया सा केस मिला है। एमएलए साहब के नामजादे हैं। रात को 2 बजे नशे में गाड़ी चला रहे थे, एक बाइक वाले को ठोक दिया। मैं क्या कहता हूँ सर, ले लेते हैं 50,000 की रकम। एमएलए का बेटा है, इतना तो बनता ही है। और एक रात के लिए अंदर कर देते हैं, ताकि पब्लिक को भी तसल्ली मिल जाएगी। अच्छा, एमएलए साहब के लाड साहब थे। जैसे कि हमारे पुलिस बंधु जो कि न्याय के रक्षक हैं और हमेशा सत्य का साथ देते हैं, इसलिए इनके मस्तक पर हमारा राष्ट्र प्रतीक सजता है। तो क्या हुआ? ये वर्दी उनकी मोहताज नहीं है। ये वर्दी मैंने देश की जनता की सेवा के लिए पहनी है और कानून की रक्षा करने के लिए पहनी है। होंगे वो कहीं के एमएलए, कानून सबके लिए एक है। पांडे, जीप निकाल, लेके आते उस साहबजादे को। हो साहब। ओ माई तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। ओ माई तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। शान तेरी
जमीन का चूमता है गगन तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन मेरा तन मन धन बस जाए घर मन जम जाए मेरा तन मन धन बस जाए घर मन देव नाम प्रिय देवों का प्रिय देव नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए सम्राटों का सम्राट है सम्राटों में विराट है उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है आ गया सूरज बन के वो आया छा गया बन के वो छाया प्रेम का मौर्य वंश का अंश अनोखा है अशोका है अशोका अशोका है अशोका अशोका है अशोका अशोका है अशोका अशोका है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. क्या लगता है सर आपको हमारा ये जो चांद को छूने का सपना है वो कभी पूरा हो पाएगा भी या नहीं? अब तो मुझे भी यही लगने लगा है कि चांद को छूने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा हमारा। सर अगर हम ही इस प्रकार हार मान लेंगे तो देश का क्या होगा? और हम कर भी क्या सकते हैं? मैडम जी, आप हमारी एक मदद करेंगी क्या? जी जी बिल्कुल, बताइए। हमसे ना ये ताला नहीं खुल रहा है, जरा इसे खोलने में हमारी मदद कर दीजिए। ये भी नहीं है, अरे ये वाली भी नहीं है, कौन सी चाबी हो सकती है इसकी? छोड़ो, जाने दो, ये नहीं खुलेगा। अरे आप ऐसे कैसे हार मान सकते हो? अभी भी इस गुच्छे में कई सारी चाबियां हैं, कोशिश करते रहो, क्या पता आखिरी चाबी से ये ताला खुल जाए। मुझे नहीं लगता इस चाबी से भी खुलेगा। अरे वाह, ये तो खुल गया। देखा मैडम, कैसे आप कोशिश करते रहे और ये ताला खुल गया। वैसे ही मुझे भी लगता है आपको शायद कोशिश करते रहनी चाहिए। इसकी बात में दम तो है। कैसा दम सर? कि हमें आखिर तक कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार इसका ताला भी आखिरी चाबी से खुला है, क्या पता हमारी सफलता का ताला भी हमारी पूरी मेहनत करने के बाद खुले। बात तो बिल्कुल सही कही सर आपने। चलो फिर काम पर लग जाते हैं, देरी किस बात की? जी जरूर। Yeah.
नमस्कार, मैं हूँ खबरदार न्यूज से। अरे रे, आप नहीं, मैं हूँ खबरदार न्यूज से। आपका विचार क्या है इस बात को लेकर? अरे डेवलपमेंट की क्या बात करता, तुमको पता हमारा साउथ का डिश सिर्फ साउथ में नहीं ऑल ओवर इंडिया में फेमस होता। और बात करते हो इधर हमारा जो टेम्पल है ना, तिरुपति बालाजी और रामेश्वरम, पूरी दुनिया के लोग उधर दर्शन करने को आता, तुमको मालूम क्या? और हमारा होटल इंडस्ट्री तो एकदम इनक्रेडिबल, मालूम क्या? अरे ओ भैया जी, हमारे बिहार की तारीफ भी सुन लो जरा। अरे सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर हमने ही तो दिए हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय है हमारे बिहार में भैया जी। हर एक क्षेत्र में सबसे ऊंचा है हमारा बिहार, 1 नंबर बात सब कुछ इधर। अच्छा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं दूसरे लोग का विचार क्या है विकसित भारत को लेकर। ભાઈ આપણા ગુજરાતની તો શું વાત, અહીંયા વાત કરવાની હોય કે વ્યાપારની, सब में 1 નંબર है अपना गुजरात। औद्योगिक भाग्यમાં બી ગુજરાત આપણું સર્વપ્રથમ। હવે આપણા PM બી તો ગુજરાતના જ છે, વાત તો હશે જ ને ખાસ। धन्यवाद। तो हम और आगे जाएंगे और देखेंगे दूसरे लोग का विचार क्या है विकसित भारत को लेकर। खमा गणेशा, खमा गणी। तो आप बताइए, आपका विचार क्या है विकसित भारत को लेकर? हम राजस्थानियों को कोई मुकाबलो को नहीं, बात चाहे यहाँ की कलाकारी हो या पचा महलारी, सब कुछ है हमारे पास। अब हवा महली देख लो, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ के लोगों के हाथ में जादू है, जादू। अचार, कपड़ों से लेकर आभूषणों तक हस्तकला का बाजार है। सब कुछ हमारे चुटकियों का काम है। धन्यवाद। अरे पाजी, आपका क्या विचार है विकसित भारत को लेकर? ओ ठंड रख, रोटी तो सब खाने ने, वो भी गरम। इदे करके तो गेहूं हमारे पंजाब दे विच सबसे ज्यादा उत्पादन कर देने। और तो और साडे पंच नदी दी तक गली वखरी हैगी जी। और साडा भंगड़ा तो इंटरनेशनल हैगा जी। अरे यहाँ तक मोतबार मिली है। आइए इनसे जानते हैं इनका विचार क्या है विकसित भारत को लेकर। कश्मीर की तो बात ही निराली, यहाँ की हवा में शायरी तो यूं ही गूंजती है। हर एक गली में शायर और उनकी मजेदार गजल और शायरियाँ मिलेगी आपको। यहाँ के कवि और उनकी कविताएं सुनकर ऐसा लगेगा मानो जन्नत की सैर हो गई। अरे मारी सुनो। अरे भैया, आज यहाँ किस बात की रिपोर्टिंग चल रही है वैसे, ये तो बताओ। अरे क्या बताए भैया, हम तो आए थे लोगों से उनका विकसित भारत पे विचार जानने, पर लोग तो आज भी अपने ही जात पात धर्म और अपने से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। न जाने कब बनेगा विकसित भारत। क्या छोड़िए, हमें क्या। लेकिन ये तो गलत है ना, हम सब तो भारतीय हैं। किसी भी जाति और धर्म के मतभेद से बढ़कर हमें तो हमारे भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। जैसे बरगद के पेड़ की छोटी से छोटी शाखा भी मजबूत जड़ बनकर पूरे वृक्ष को मुश्किल से मुश्किल समय में भी डटकर सामना करने में भी मदद करवाती है, वैसे ही हम सबको एकजुट होकर भारत को मजबूत और सारे जहां से अच्छा एक साथ मिलकर बनाना होगा। कर्मधात्री जन्मधात्री कई सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन सर्वते कोई धड़कन भक्त मोर श्रद्धा मोर तुम प्रेम का मृदंग रंग
रंग एकता का तो युगों से एक छंद साधना का तू यल्लवन्न सेरि मिडिव प्रेमनादनी युगयुगगण साधನೆಯ ಶಿಖರನಾದನಿ तेरी शान तू महान ज्योति तू किरण करे तुझे नमन अभिमान ಮಾಡುನಿ ಗಣಾವಿರತ್ತುನಿ निवार को मिलूंगा जागर हमार भारत है एक जागे उठो भारत सजो अरे जागृतो हम भारत नारी इंडिया बलवितो जय भारत वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम जय भारत वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम जय भारत जय हिंद। अरे जय हिंद। चाचा आपको नहीं, तिरंगे को सैल्यूट कर रहा हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये तिरंगे को इतनी जोर से सैल्यूट क्यों कर रहे हो तुम? पता नहीं चाचा, मैं स्कूल, नगर पालिका, टीवी जहाँ भी हमारा ध्वज देखता हूँ एक अलग सा गर्व महसूस होता है। कुछ बात तो है इस 3 रंग और चक्र में। बात तो सही कही छोटे फौजी, तिरंगा देखकर गर्व तो बहुत होता है, क्योंकि ये तिरंगे के 3 रंग हमारे आजाद हिंदुस्तान के शौर्य, शांति और शुभता का प्रतीक है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, त्याग, संघर्ष और बलिदान के बाद जो सौभाग्य हमने पाया, आज ऊंचे आसमान में लहराया हरा श्वेत केसरिया। और हाँ छोटे फौजी, इस तिरंगे का गौरव हमेशा बनाए रखना। आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे छोटे फौजी ऐसे नहीं। जय हिंद। जय हिंद। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। भारत की संस्कृति पर न जाने कितने भारी हमले हुए। खिलजी, मुगल और ब्रिटिशर्स ने दुर्लभम भारत जन्म कहे जाने वाले भारत में भारतीयों का ही जीना दुर्लभ कर दिया था। लेकिन जैसे कमल का फूल अपने आप को 1300 साल बाद पुनः जीवित कर सकता है, वैसे ही आज हिंदुस्तान एक विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान है। वो भारत जिसका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिस देश में हर गुनाह का फैसला न्यायाधीश की कलम करती है, एक ऐसी कलम जो निर्दोष को माफी और अपराधी को दंड प्रदान करती है। राष्ट्र प्रतीक की तरह अर्थव्यवस्था हमारी शक्ति, नई शुरुआत हमारा साहस, विकासशील से विकसित बनने का हमारा आत्मविश्वास और संस्कृति के लिए हमारा गौरव हमेशा बना रहेगा। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा हमेशा देश की मिट्टी के लिए कुछ कर दिखाने का हौसला बुलंद करता है। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा हमेशा
देश की मिट्टी के लिए कुछ कर दिखाने का हौसला बढ़ाता है। इस देश का वर्तमान देखकर मुझे आने वाले भविष्य से काफ़ी सारी आशाएं हैं। मैं जो उल्टा पढ़े जाने पर गारंटी हूँ, सीधा पढ़े जाने पर इस देश की शान तिरंगा हो। And now, can I please have the honor of inviting our chief guest, Colonel Anil Deshpande sir, who has graced us with his presence on the dais and addressed the gathering with his words of wisdom and love. Can I please welcome sir with a huge round of applause?
Good morning, everybody. First of all, I think we should clap once again for all the performance. Since yesterday night, I was preparing what to speak. You know, the gathering will be of the trustees, students, faculties, administrators. I don't know, but I lost everything now. Whatever I gathered in my mind, what to speak. So whatever comes now is from my heart. First of all, wish you very happy Republic Day. And I am at Parul. So I think I should start with Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parat Brahma, Tasmayana Shri Guruve Namah. Life starts with Guru. Guru in all forms. Guru is not only your teacher. Anybody can be your Guru if you learn a lesson from him and you have that adaptive mind to understand what he is trying to teach you. Now, everybody's life is governed by few personalities, few circumstances, and everybody has their own story to tell you. Now, I always connect this thing with major pillars or major contributors in your life. My career in military, 24 years. But today I am standing here because of, I will say, 4 pillars. First of all, God, whose presence is everywhere. My parents, my gurus, and your partner, my wife. Now, when you say that with conviction, you cannot do anything in your life alone. There is a medium and there is a God who will propel you through hardships, your sincerity and hard work. So with this, there is no sequence. That's what I told you, that my thoughts are, coming in my mind abruptly. For this opportunity, I must thank you, Dr. Devanshu Patel, who is the visionary and president of Parul University, Dr. Parul Patel, managing trustee, Dr. Geeta Patel, vice president and medical director, Dr. Komal Patel, vice president and member of governing body, Dr. Amit Gangatra, vice chancellor, and Mr. Manish. Apart from this, all deans and faculties of 21 faculties, if I am correct, here in Parul. And the heart of Parul is 57,000 students. I was just I was having glance through what is the education policy, and you all are sitting here. You should be proud of you for one reason. Only 27% of India's population get the higher education opportunity. You are amongst them. Please understand. 27 is very very minor number, and when you talk about, you should feel proud of yourself and you should thank God and your parents. They have given you this opportunity. The medium is Parul University. Now you have begun your vibrant life at Parul. That's what the motto of Parul is. Vibrant. What do you mean by vibrant? Somebody was mentioning that India is chaos. I also agree with that. India is chaos. But India is chaos like what? You have seen a song? Madhumakhis, wo sari chalti rehti na, dane baye. But direction is only one.
There may be some chaos happening at individual level, organizational level, institute level in India, but they all are heading to one direction, that is Shresth Bharat. When we talk about that, this university is a major contributor. How many of you have visited the website and taken a pain to understand what is NAAC grade A++? You should search on internet. What is the qualification required? What is the process? I have gone through this as a Dean of Aviation Faculty. And it took us 2 years to make that, to get that accreditation of NAAC A++. Mind you, it is A+ also, there is B also, there is C also. A++ getting is not that easy. So please understand, it is not written on Parul website, this NAAC. So today when you go back, please read on website, what is the qualification required, what are the processes to get this accreditation. This university stands among these 2% of universities in India with such accreditation. Talking about the awards, I think Parul must have around 175 international and national awards in various categories. Moving to when we talk about diversity, most of the time we use this word diversity very vaguely. What is diversity? Diversity comes when you get all culture together, what the performance I have seen here. So today you have not only Indian studying in this university, but across the globe, the footprints are being put on the global map also by Parul. Talking about the young minds of India, I think whosoever sitting here and not sitting here are lucky today. I was talking to ma'am. You are lucky because you are born in such an era that you will see the India's growth, India coming in top 3, all development happening. You are lucky. Now imagine why I am saying this, the opportunities in front of you. Imagine the sectors, imagine the portfolios, imagine the disciplines where you can do your best. And your discipline may be anything from engineering, arts, science, history, anything you study, medical, Ayurveda, anything. There is a scope to excel in your field. So you are lucky that you are born in this era. Now, putting parallels of leadership of military, how it is affect to day-to-day life, and as a student, what you should learn about life. I am not that great dignity or philosopher that I'll tell you something different. The same, everything is available in books. What I am trying to convey to you with my own conviction, what I learned in 24 years of service of my military career. Nothing is impossible. I started my schooling from village where we used to cross the river and to go to the school. My father and mother said it is okay till 5th, 6th standard because I started my schooling from 4th standard. I learned ABCD in 5th standard. Can you imagine? I still remember whenever guests used to come to my place, my father and mother used to say, please ABCD unko batana bolke. At 5th standard. You are much better state in than what we have gone through the education. What I am trying to convey to you, nothing is impossible. It is your hard work and sincerity that matters. In army, there are many organizations and I know about only army. So by saying this, my organization is great. I am not trying to, tell you that other organizations are not doing well. As one of these kids said that everybody is contributing in their own way. MC said, I think that. It is not only army. All sectors, everybody is contributing in their capacity for the nation building. And what role of Parul, that I'll subsequently tell you when I felt that what is the role of universities in your life.
Now when you say, what is the army? It is a leadership. Leadership doesn't mean that you lead the troops for battle. Leadership is everywhere. It starts from your home. It starts from your class. It starts from your university days. Whosoever is performing, who is leading, who has a attitude of being a volunteer to undertake the cause is a leader. To become a leader, it doesn't mean that you have to only command the people and you just say that he is the leader only. Leader is in every capacity. You can become a leader. And you will find around you, when you travel in buses, you will find one or two people are actually standing apart. When it comes to something, bus breakdowns or something happen on the road, people will come and help those. That is also quality of leadership only. So leadership in military doesn't mean that it is only military officer has the qualities of leader. No, everyone should have and has capacity of leadership. The qualities of good leader, amongst the most important, what I felt during my 24 years of service, one is the self-confidence. Most of the time we lack in that, because we try to give an unnecessary credit to the people in gatherings. Have a self-confidence. Do not worry about your conduct, code, or your language, or your look. You should not be worried about that. Self-confidence should come within, and I think that everybody should possess. If you have that fear of, you should do the introspection. Next comes the moral ascendancy. I'll talk about it. What is moral ascendancy? Self-sacrifice. We always say selfish, selfish, selfish. What is self-sacrifice? It is not only giving your pran to Balidan and all the nation. Sacrifice comes in various roles and categories. Then the fairness. When you deal with your teachers, you're at your home, at your workplace, you should be very fair. Then next comes the dignity and courage. Dignity and courage, I think this comes from your sanskar, from your parents. And that I will connect with the military life and how it affects to your personal life also. So first comes the know your men. We say in army, know your men. Men means soldiers. When you command, we call them men. Know your men means that you cannot become a leader or a CEO of any company or a director or manager when you are not connected with the staff. When I say staff, starting from that karmachari who's cleaning, he is from that housekeeping section till whosoever under you, manager or anybody, connect with them. Main problem is that we don't connect with the people. In our army culture, I know each and every Jawan. If I am commanding 700 Jawans, I know their faces, I know their names, I know their background. That is most important part. So when you grow up in your career, wherever you go, if there are 5 people under you, 10 people under you, 50 people under you, please talk to them, speak to them, understand them. That is what is most important part. So connect with your men. Second comes the be an example to your men. When I say example, only pass the order what you can do it. Do not try to unnecessarily impose your command or something which cannot be done practically. You should not tell people to do it. Have a sympathy when you deal with people. If you feel that, always put yourself into that place. If somebody tells you to do the same thing, will you able to do it? If your answer is no, do not pass that order to anybody. Third comes the self-sacrifice. Sacrifice doesn't mean that only life. Small things, sacrifice matters a lot. If you are calling your staff on holiday in office, you should be in office. So sacrifice your time also if you are telling somebody to do it. So self-sacrifice is very important because this is the way you lead
lead the people. So your conduct has to be exemplary. So your self-sacrifice is very important, not only in military, but in day-to-day life also when you grow up. There is a quote when we pass out from Indian Military Academy. There is one stone. On that stone it is written in Hindi, Antim Pag. Last step. After that there is no looking back. This may be your last walk. There is no looking back. And when we take oath, there is a motto in front of us by General Chetur, a British military officer, which is very important when you command in military, and I feel that this is important in your life too. What is that motto says? The safety, honor and welfare of your country come first, always and every time. So country is first. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. First country, then comes the men you command. And the third, your own ease, comfort and safety come last, always and every time. So you are at last actually. This is the way you should conduct yourself in life. Next I say fairness. Fairness doesn't mean that you treat everybody equal. Competency, their status, hierarchy is very important in any organization, starting from your home also. So when you deal with people, there must be trust and there must be fairness. You should be just with your actions, not with bias, not any motive, or not with any intentions. So be very fair with people in your life. Be ready. As we say in army, you should be always ready for any contingencies. So when I say be ready, the man who prepares himself, who studies beforehand, who makes tentative plans, and when he is confronted by the emergency, he is ready for that. So do not wait for the orders. If you are working in an organization, your class, or in anywhere, do not wait for the order. You should prepare yourself for any contingencies, including your life also. Next comes the courage and dignity. Every time you change your order without obvious reasons, that shows that you lack in courage. If your orders are just, if you are thoughtful by passing these orders, they will be good for the organizations. You should not keep changing it. Today you are saying something else, tomorrow again you come back, say no, that is changed. That shows you don't have any courage to take decisions and pass the orders. Dignity, everybody has their own self-respect and dignity. Do not be belittled with people around you. Next, learn new things. When I say learn new things, a lot of people think, I also thought when I graduated as an engineer, abhi army mein jaunga, there's no studies. But it was a different world in army. After coming to army, I have done 17 certification as well as graduation courses. 17. I came with different thought process in army, but army molded me differently. I learned, me and my wife, we learned 2 languages. Recently, one after we got married in 2002, we learned French, and in COVID we learned German. So there is actually, you should try and do this thing. You should learn some hobby, some skill, something you should learn differently. Then nowadays I see that we don't read. And you always feel boring. You know, somebody tells you, no, your professors must be telling you, please read, please read, please read. I will also tell you the same thing.
there is no alternative, there is no shortcut for knowledge, mind you. Digital media, news, or anything, movies, there is no knowledge gain. Read, at least finish one book in 3 months. Any book under the sky, anything. You will see yourself what it changes in your thought process. Learn, do the community service, very small step. Any fundraising, any activities happening nearby, please contribute. You have a social responsibility also. So in your free time, try to learn new skills, contribute to the society welfare activities. Health. This is one thing which you cannot reverse. You may become CEO, you may be rich. Health nobody can give you, and it is in your hand. When you cross 20, you please have a healthy habits in life. Do not smoke, do not drink. Have healthy food, because you will not realize it now. When you cross 40, 45, then you realize what mistakes you have done in the past. So live the healthy life. Now, coming to the, again, university. You know, nation building doesn't happen like that. It is not the job of government to do the nation building. I always say that there are 4 pillars for nation building. The first pillar is education. Second pillar is good governance. Third pillar is industries, whatever industry you say. Fourth pillar is population. Where Parul stands? At first and last pillar. Population, vibrant population. Students, you are here. Future of India is here. Where Parul stands? First pillar, education. It is a major contributor to the nation building. You are lucky that you are getting the education in best of the facilities, best of the environment. Lot of your counterparts in India, they will not see these facilities, this environment, this forum. So you are lucky actually, if you are here. As I speak, our 13 NCC cadets are marching on Kartavya Path. They are from Parul University. Contingent of 13 in Republic Day parade, it is a rare achievement. You can imagine the India's NCC cadets participating, qualifying. 13 is a very big number. So you should be proud of this achievement. On your behalf, somebody is watching, or somebody is walking also and watching them also at Kartavya Path. I have interacted with Parul students during Know Your Army Mela when we organized at EME school. I am interacting with Commander Sanjay on these aspects when he brought the students there. Everybody wanted to know how to join the army. Joining army is not a big game. It is just that information is not there. During our time, it was only in employment news which comes physically. We never had any mobile, laptop or that, nowadays you just search on YouTube how to join which entry, you will get all the information. You visit Indian Army website, you will get all the information. Joining army, there are so many disciplines, there are so many entries, NCC, technical entry. I was engineer graduate. I remember, like I am standing here, that time somebody came and gave a lecture how to join army. But I was not keen to join army. So after graduation, I went to L&T.
campus interview happened, and I went to L&T Mumbai. I was very happy, you know, getting into L&T and all this thing. So my father used to visit me in Bombay, and every time he used to say, "Why don't you join army?" So I said, "I'm okay, I'm happy here." No, no, you just go and just appear for interview or something like that. So after 1 or 2, 6 months, in fact, working after L&T, I just filled the form. Let me go, at least he will, next time he comes, he will not say, you know, why don't you fill the form? So मैंने form भर दिया, भेज दिया. I went for, you know, exam, interview and everything. And I got selected. Seeing the complete process of selection, the motivation came from there. And I am the first officer from my district to become a military officer. And what army has given me, I was ready to die in Kargil war, because when I was going on front, there were more than 9,000 people on railway station to see me off from my village or district. 9,000 people. Most of them were crying. They thought I'll never come back. Because in interior Maharashtra, they don't know about military in most of the places. So they think that कि army मतलब क्या है? जाना और लड़ाई करना border पे and खत्म. Army is not that. Army is the vast ocean of technology. There are so many disciplines. It is not only fighting. So whosoever feel that what I can contribute, they can come in any entry, NCC, technical entry, after becoming engineer. You have so many options. Join as a short service commission officer. Serve for 5 years, 10 years. Come to the corporate. You see what change it brings to you when you step into the corporate sector. So, if you are not willing to join, there's nothing wrong in it. As I was not willing earlier. But do your best in any sector. Put in your hard work. These are golden, I will say golden years of your life. Whatever you invest now, you will see after 10 years. But if you are lazy, if you are just following your friends, acha, he's taking that elective, let me go to that elective. See what you want. Open one diary, write down your life plan, what you want to do it. And write down impossible targets. At the age of 41, I appeared for GMAT, just like that. Because everybody used to say, my uncles, sons and all, they are appearing for MBAs and all. Somebody is trying for Stanford, MIT and all this thing. One fine day he said, uncle, oh, GMAT na is very difficult. You require that score 780, 760, then only you can get in. मैंने कहा अच्छा. I studied for 1 year during my UN mission there. I scored 760 in GMAT. I am a very average person throughout my academic year. I never scored more than 65%, including 10th. Can you imagine? Engineering, I could barely touch upon 68%. When I went to IIT in aerospace masters, like you, they were all bright students, very brainy. Coming to IIT, that's what the misnomer we have. I say misnomer. There is no alternative to hard work. When I entered IIT, class of 36, I stood second at the second year. Now imagine, I am average throughout my life. So if somebody is thinking that my marks are actually, I am an average student, it is a wrong thing. You can change your mind, your thinking with hard work at any level. There is no alternative to hard work. God may give you IQ of 150, 160, 130, 120, but you can compensate and get into the top with your hard work only. I will not take much of a time. I already taken, I think, more than 35 minutes. So,
I came to know that in Parul University you have Armed Forces Motivational Cell under Commander Sanjay Sharma and Lieutenant Commander Gaurav Sharma. I think if you want to, even if you don't want to go, please be part of that cell. Understand what armed forces, military, army, air force, navy does for your country and how you can get benefited with their thought process, their way of thinking. So you should become a part of number of activities happening at Parul. Do not restrict yourself to the academics only. Your mark sheet is only seen once. Your extracurricular activities, even if you appear for MBA or all, your resume should be reflecting with, apart from your academics, your experience in other activities are most important part, because that is what your personality develops. So participate in all the events. Take advantage of all the clubs what you have in Paruls. And last but not the least, there are no secrets to success. A lot of YouTube people, you keep searching how to become a successful, how to become a successful. There is no secret to success. Your hard work, your luck, the environment plays very important role. It is a result of preparation. Success is a result of preparation, hard work, and learning from failures. Do not dishearten. You have seen the movie, I think, 12th Fail. You know, it is a true story. This is only one story. There are 1,000 stories in India like this. In my class in IIT Bombay, one student was the son of a cycle rickshaw wala, not even auto rickshaw, cycle rickshaw wala. He came to the IIT. Now imagine what facility he has. आपसे तो कमी होगी उसके पास facility. So there is no shortcut to the success. And remember, when you become successful, and you all will become successful, success is not the final. If somebody has ego, कि I am successful, I have achieved everything in life, success is not the final. And also, failure is not the fatal. Always remember, that is not the end. So both the things are temporary phase of your life. It is the courage to continue that counts at the end of the life. Once again, wish you Godspeed, all the best, and I am very grateful that I got this opportunity. Grateful to the all trustees of Parul University, all faculties, and once again wish you very happy Republic Day, and be part of this vibrant India's growth and write a chapter in your own way. Thank you. Sir, can I please request you to be on the stage? Thank you, sir, for this impactful and inspiring words. And I'm sure that his speech not only enlightened us, but also reminded us of the values and sacrifices that defines the true leadership. And sir, very thank you for your service and always being a beacon of inspiration for all of us. Thank you, sir. And now I request Dr. Parul Patel ma'am and Dr. Gitika ma'am to please come on the dais, along with Mrs. Mayuri Deshpande ma'am to please join us on the stage. Can we please have a huge round of applause? I would like you all
that today it is an exciting day for us at Parul University. Obviously, it is our 75th Republic Day, and also our cultural students are representing Parul University at Kartavya Path in our national capital, New Delhi, in front of Honorable President of India, Draupadi Murmu. Right now, they are representing us at Kartavya Path. So, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. All of you to have a group photo. Please stay back on stage. I'm sorry. We would like a group photo with our performers for today. So, I'd like sir to know that today our students are representing Parul University at Association of Indian Universities, Nagpur, in various categories. I would like Anil sir, Colonel Anil Deshpande sir, to know that our students currently are representing Parul University at Kartavya Path in our national capital, New Delhi, in front of Honorable President of India, Draupadi Murmu. So, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Right now, presently, they are representing our university in New Delhi. They have been practicing in New Delhi for a month. And also, sir, I would like you to know that our students are representing Parul University as at Association of Indian Universities, Nagpur, in various categories of art and culture. And today we are awaiting the results for it at 12 p.m., which is right now. And we'll be getting to know the results very soon for that. So, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे students के लिए who are representing our Parul University in Nagpur. Also, एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के सारे परफॉर्मर्स के लिए. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Can I please request Dr. Gitika Patel ma'am to please be on the stage? Ma'am is the Vice President and Medical Director of Parul University to bless us and give the vote of thanks. Before that vote of thanks, what Gujarat has given me. You know, Gujarat has given a lot of things to India. My wife is from Gujarat. A very good morning to all. First of all, heartful and joyful Republic Day wishes to each one of you. सबसे पहले तो I would like to heartily congratulate all the children who have performed brilliantly today, and I was seeing, you know, tears in the eyes of some of these children who are performing. So that is, you know, the heartfulness and the emotions that we aspire to keep in our hearts for our nation. Also, we are extremely proud of all the students who are representing the university, bringing laurels to not only the university but the state and the nation in various platforms, be it our 13 cadets, as sir mentioned, who are
representing and are a part of the Republic Day parade at the Kartavya Path today. We have a cultural troupe of the Gujarati folk dance who are performing in front of the Honorable Prime Minister today in the Republic Day cultural event. And as the anchor was mentioning, we have around more than 50 students who are right now representing the university in the Western Zone AIU event, and they have performed truly brilliantly, and we are awaiting wonderful results this afternoon by 2 p.m. So let us have a huge round of applause for all the students. We are extremely proud of all of you. Also, I would like to thank the entire team of Cultural Affairs and our choreographer Ram for choreographing and putting the wonderful show today. So dear students, as you know, talking a little about the Republic Day, we all know that it's a day when we celebrate our foundation, our values, our unity. And more than that, it is a day which reminds us about the duties and the responsibilities that are entrusted upon us by the Constitution of India as the citizens to make the country a bigger, a better and a stronger nation. We all call your generation by the name of generation Gen Z or Gen Alpha. What is it right now? Gen Z. So I think you all belong to Gen Z. The school children now belong to Gen Alpha. There is another name which is given to your generation. We call it can-do generation. So everybody believes that your generation is a can-do generation, having great aspirations, lot of opportunities, lot of resources and very few limitations, be it in the mind, be it in the society, and the world is all open for you to perform brilliantly. As students, as young generation, it is very, very crucial for us to understand and realize that how our contributions are of value to the nation. And when I talk about our value, our contribution, it reminds me of a very small incident from our own Ramayana. We very recently witnessed an unprecedented event which united the entire nation in the consecration ceremony of the Ayodhya Ram Mandir. So sharing a very small incident from the story of Ramayana, I'm sure all of you have read, सबने देखा है, पढ़ा है रामायण के बारे में. So we all must be knowing, जब राम भगवान सीता जी को वापस लेने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक समुद्र आता है, right? We all know about it. और वो समुद्र को देख के राम भगवान, लक्ष्मण जी सब थोड़े चिंतित हो जाते हैं, थोड़े परेशानी में आ जाता है कि how will we cross this ocean and the sea now? So they have been thinking for the 2-3 days कि ये समुद्र को हम कैसे पार करेंगे. इतने में समुद्र देवता get out from the ocean in the middle of it, and they tell and they suggest that we are there to support you. You can make a bridge in the ocean and cross this ocean, and सीता जी को आप वापस ला सकते हैं. So ये विचार से बहुत excited हो जाती है पूरी वानर सेना और जितने भी लोग होते हैं राम जी के साथ, और वो ब्रिज बनाने के आइडिया को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं. So what they do is they start putting very big stones in the ocean with the name inscribed on it. राम जी का नाम लिख के पत्थर डालना शुरू करते हैं एक के बाद एक, और सारे वानर इकट्ठे होके टीम वर्क के साथ बहुत मेहनत से ये काम शुरू करते हैं और एक ब्रिज बनने लगता है. ये काम के बीच में एक छोटी सी गिलहरी होती है वहाँ, एक स्क्वेरल, who is also trying, very passionate, very devoted to contribute. वो कुछ करना चाहती है. बहुत बड़े पत्थर तो वो उठा नहीं सकती because she is very small. So what she does is she holds the small pebbles and sand in her mouth. वो मुंह से वो छोटे छोटे पत्थर उठा के और जो बड़े पत्थर वानर सेना डाल रही होती है उसके बीच बीच में जाके भरने लगती है. कंटिन्यूसली वो ये काम करती है और सारे बंदर जो है उनके बीच में, उनके पैरों के बीच में आती रहती है. सो ये देख के एक बंदर बहुत इरिटेट हो जाता है और वो उसको उठा के साइड में फेंक देता है. नाउ राम जी, as we call him the Purushottam, the keen observer of the world, he is observing this very patiently. वो देख रहे होते हैं सभी क्या हो रहा है. वो उठा के फेंक देता है उसे, वो फिर से आ जाती है, फिर से उठा के वो पेबल्स पत्थरों के बीच में डालने लगती है. नाउ अगेन द वानर सेना जो है वो इरिटेट होती है और राम जी के पास जाती है कि ये हमें हमारा काम करने नहीं दे रही है, आप उसको बोलो कि वो साइड में आराम से बैठ जाए. तो ये सुनकर राम जी सबको बुलाते हैं, राम भगवान सबको बुलाते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर आप डाल रहे हैं उसके बीच में जो जगह रह जा रही है, अगर उसे फिल नहीं किया जाएगा तो ये ब्रिज जो है बहुत अनस्टेबल होगा. और ये काम इतनी निपुणता से ये गिलहरी, ये स्क्वायरल कब से कर रही है जो समहाउ आपने देखा नहीं है,
but the contribution, the effort, the passion with which she is putting these pebbles and the sand in between these big stones is what is going to make our bridge strong, and that is how we will be able to cross it. ये सुन के सबको रियलाइज होता है कि ये छोटा कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट करने वाला है, एंड राम जी बहुत ही प्यार से उसकी बैक पे हाथ फेरते हैं. दैट इज हाउ वी सी दीज 3 लाइन्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द स्क्वेरल्स बैक टुडे as we hear about the stories. So dear students, the contribution, whatever we do, could be small and big. You all could not be holding, as sir was also mentioning, big positions as ministers, as commissioners, as corporators, but as citizens of the nation, whatever value, whatever contribution you create is going to make the nation strong. That is what we always need to understand and realize. As students, getting the best education, making the best and correct use of it, adapting the highest ethics and standards, incorporating and inculcating the correct values inside you, as sir was also mentioning about the values. I will not go into the details of those values. And realizing how you could contribute beyond your own self-interest towards the nation is what as students, as young generation, we shall all aspire. Today is a wonderful time to be in our country. The entire world is looking forward to the country as the leader of the continents, as it is a leader of the world. So you all should be proud that you have got an opportunity to be in the country at a time when it is the best time and place to be. So with this, with a few lines from a Hindi poem which our Honorable Prime Minister recited about the same fact, how this is a wonderful time to be, I'll end with a big thanks to all of you. So the lines go like this. यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो. यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है. कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको. तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो. भारत का अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है. With this, a big thanks to our entire team, to the wonderful audience. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, ma'am. Can we give a huge round of applause for ma'am once again? With this, I would like to tell Colonel Anil Deshpande sir, that sir, it was a pleasure hosting you at Parul University. Thank you so much, sir, for gracing us today. And sir, I request all our dignitaries to please proceed towards our lounge area. Thank you so much. Let's give a huge round of applause for all our dignitaries.